myself Madhu Chaudhary, assistant professor in botany, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फंजाई। इंट्रोडक्शन। Fungi is a general term which is used to describe a group of eukaryotes characterized by the absence of chlorophyll and by the presence of rigid cell wall। यानी फंजाई जो है इनका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है यूकैरियोटिक सेल्स, एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड प्रेजेंस ऑफ ए रिजिड सेल वॉल। They can exist either as unicellular in the form of yeast or as multicellular in the form of mold. Now, some other general characters of fungi are: they are cosmopolitan in distribution and can occur in any habitat where life is possible. Some fungi occur in fresh or marine water, other are terrestrial and some other are airborne. Many species are parasitic, infecting plants and animals and human beings. Now, the plant body of fungi consists of branched and filamentous hyphae which form a net-like structure known as mycelium। यानी फंजाई जो है इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है कि इनका प्लांट बॉडी जो है वो हाइफी से बनता है और ये जो हाइफी है वो खुद जुड़कर जो है वो माइसीलियम का फॉर्मेशन करते हैं। Now, the hyphae are septate, aseptate. Cells or of septate hyphae can be uninucleate, binucleate, or multinucleate. Multinucleate cells are present in Ascomycetes, Basidiomycetes, and Deuteromycetes. As we can see this in this slide, this septum, this is septate hyphae and this is aseptate hyphae which is also known as sinusoidal hyphae. The septa usually have simple pores, but Basidiomycetes septa with doliopore can occur. On both sides of the doliopore, a double membranous structure, septal pore cap or parenthosome occur. These septal pores form a valve-like structure. Now we can observe this in this diagram. This is simple pore septum which is surrounded by a protoplasmic membrane, and this is doliopore septum. Doliopore septum which is surrounded by a pore cap also called as parenthosome, and pore cap parenthosome with its doliopore consist of doliopore structure. Now, fifth characteristic: with the exception of the slime mold, the protoplast remains surrounded by a distinct cell wall. The main component of the cell wall is fungal cellulose, also known as chitin. In some lower fungi, for example, member of Oomycetes, the cell wall is composed of cellulose and glucan. मतलब फंजल सेलुलोज जो है उसे काइटिन भी कहते हैं। स्लाइम मोल्ड्स जो है इनके अंदर सेल वॉल जो है वो नहीं पाई जाती। The hyphae contain colorless and vacuolated cytoplasm. Beside endoplasmic reticulum and Golgi body, many non-living substances like reserve food also occur in cytoplasm. Fungi are entirely devoid of chlorophyll, but some carotenoid can be present. The hyphae are homo or heterokaryotic. Heterokaryotic means दो प्रकार के केंद्रकों का पाया जाना। हैप्लॉइड सेल्स आर देयर, डिप्लॉइड सेल्स आर देयर, लेकिन डिप्लॉइड फेज जो है फंजाई के अंदर बहुत कम समय के लिए ही पाया जाता है। उच्च कवक
या higher fungi, for example Ascomycetes, Basidiomycetes and Deuteromycetes are immotile. मीन्स फंजाई के इन क्लासेस के अंदर जो मोटाइल सेल्स जो है वो नहीं पाई जाती, लेकिन जो लोअर फंजाई होते हैं, लोअर फंजाई में आपको याद रखना है फाइकोमाइसिटीज, द रिप्रोडक्टिव सेल्स आर मोटाइल एंड जो मोटाइल सेल्स होती हैं उनमें एक या दो फ्लैजिला जो है वो पाया जाता है. द फ्लैजिला आर ऑफ टू टाइप एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, व्हीप्लैश फ्लैजिला एंड टेंसिल flagella. Whiplash flagella are smooth, but tensile flagella have mastigonemes like hair-like structures on their surface. Now we can see fungal structure, cytoplasm, nuclei, hyphae. This is aseptate hyphae and this is septate hyphae. Generalized fungal life cycle, sexual cycle and asexual cycle. Asexual cycle जो है फंजाई के अंदर asexual स्पोर्स जो है उनके जर्मिनेशन से फंजाई का फॉर्मेशन होता है. इस तरह से asexual साइकिल जो है वो कंप्लीट होती है. सेक्सुअल साइकिल जो है फंजाई में उनमें डाइकैरियोटिक हाइफी और माइसीलियम के अंदर जो दो प्रकार के केंद्रक पाए जाते हैं उनके अंदर उनका फ्यूज़न होता है और फ्यूजन होने के बाद में उनमें मियोसिस होता है और मियोसिस के बाद में सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं और उन स्पोर्स के द्वारा के जर्मिनेशन के द्वारा फंजाई प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन होता है. Generalized characters of fungi: protoplasm of hyphae cell is surrounded by a rigid cell wall. The fungal cell wall contains ergosterol rather than cholesterol. Fungi produce a unique form of tubulin in connection with nuclear division. Fungi have a unique biosynthetic pathway for synthesis of lysine. Fungi have a small nuclei with very repetitive DNA. Mitosis occur without dissolution of nuclear membrane. All are achlorophyllous. As we talked about it, fungi are never autotrophs because they don't have chlorophyll or chloroplast. May be free living or in intimate relationship. Fungi are usually found in opportunistic saprophyte or in some पैरासाइट और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद एनी अदर ऑटोट्रोप. यानी फंजाई जो है वो मृतोपजीवी हो सकते हैं, परजीवी हो सकते हैं या फिर सहजीवी हो सकते हैं. फंजाई रिप्रोड्यूस बोथ सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली. फंजाई रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स, बडिंग्स और फ्रेगमेंटेशन. स्पोर्स कैन बी बोथ बाय मीन ऑफ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Possess characteristic storage range of organic compound as glycogen, sugar, alcohol and lipid. Fascinating world of fungi. Fungi are extraordinary organisms which are neither plant nor animal. One of the most important group of organisms on this plant. Some of the world's largest, possibly oldest individuals. Hallucinogenic magic mushrooms are found in this group. Some are silent killer with deadly poisons. A vital ingredient in beer and bread is fungi. Decomposers essential for natural recycling, helping to guarantee life on earth. Miracle cure for disease. Indispensable partner for many plants. Fungi as saprobes and decomposers are seen in this slide. Now, summary. Eukaryotes, as we talked about it, fungal cells have membrane-bound nuclei and organelles. Heterotrophic, they must absorb organic carboniferous material to grow and survive, unlike plant, which only need
inorganic carbon and sunlight to eat. Saprophyte या मृतोपजीवी, they feed on dead and decomposing matter. Cell wall is formed of chitin, जिसको हमने फंजल सेलुलोज भी कहा. स्पोर प्रोड्यूसिंग, और स्पोर्स जो है हमने कहा कि दो प्रकार के होते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स और सेक्सुअल स्पोर्स. As we can see in this picture, mycelium is formed by the network of hyphae, and fruiting body is that structure which is seen above the surface. They produce hyphae. Most are multicellular and have a multicellular phase. Their visible structure are haploid. They prefer dark, moist environment. Many can reproduce sexually, but all reproduce asexually. Zygotic meiosis क्या होता है? This means that there is only one diploid cell in the organism life cycle, and that is the zygote. यानी जाइगोट ही एकमात्र जो है द्विगुणित कोशिका होती है, which form from the fusion of two haploid gamete and immediately undergoes reduction division to form haploid cells, जिसके अंदर जो है बहुत जल्द ही जो मियोसिस डिवीजन या रिडक्शन डिवीजन हो जाता है और हैप्लॉइड सेल्स बनती है, जिनके अंदर माइटोसिस होता है एंड जेनरेट ए मल्टीसेलुलर fungus. Virtually any part of any fungus that is visible to the naked eyes is haploid. As we can see, structure of fungus cell, nucleus is seen, cell membrane is there, cell wall which is chitinous as we talked about it, contractile vacuoles are there, cytoplasm, food storage granules,